मैग्नीशियम करना सर बच्चों am I audible? If please confirm yes or no. जो मेरी आवाज आ रही है आप सबको कंफर्म कीजिएगा। मैंने लास्ट क्लास में कुछ प्रोजेक्ट दिया था आप लोग करने के लिए, कितने लोग किए हैं कंफर्म करेंगे? Yes anyone? Please confirm. एटलीस्ट आप रिप्लाई भी कर सकते हैं यस और नो। बच्चों मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आई थिंक क्लास है तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करोगे ना तुम लोग। इसको क्या बोला है कि
बच्चों आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे? कौन सा टॉपिक था? यस एनीवन? आज मैंने सारे बच्चों को टॉपिक दिया था कि इस पे आज प्रेजेंटेशन करना था, आप लोग आए ही नहीं, और आप लोग आए ऐसे बच्चे जो लास्ट क्लास में थे ही नहीं, तो ऐसे में कैसे क्लास होगा? और कैसे आप लोग बस अटेंडेंस के लिए क्लास करते हो? ऐसे में क्या करवाऊंगा मैं? अब मैं लगभग लगभग खत्म हो गया सारा एल्गोरिथम, अब मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, प्रेजेंटेशन में आप लोग आए ही नहीं। यस विकास कुमार, यस सर। प्रेजेंटेशन क्या आप अब तो क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्या एक दिन ज्वाइन करने से कैसे सीखोगे क्लास? सर हेल्थ इशू हो गया था, क्या चीज? हेल्थ इशू सर चल रहा था इसलिए क्या चीज? तबीयत खराब हो गया था। अच्छा, और बाकी लोग? अक्षित वर्मा, अक्षय वर्मा, अक्षय वर्मा, आप रिप्लाई कीजिए। विनायक, यस सर। टॉपिक दिया था, प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया हो? सर एग्जाम है सर 5 तारीख से, तो उसी वही पढ़ रहे थे। एग्जाम में 5 तारीख से? यस सर। स्टडी लीव मिला है आप लोगों को क्या? नहीं सर, नहीं ना मिला है। फिर ये तो इंटरनल एग्जाम है ना? यस सर। तो प्रेजेंटेशन रेडी किया हो ना, बोला गया टास्क करना चाहिए ना आप लोगों को। सर तो बीच में एग्जाम आ गया था सर, का रूटीन आ गया, तो इस वजह से नहीं। एग्जाम रूटीन आ गया, लेकिन बनाए क्या हो ये बताओ विनायक, कोई सर बना हुआ? बना सर कुछ नहीं है सर, वही हम सोचे थे सर कल करेंगे, लेकिन फिर। अभी कोई भी एल्गोरिथम बना हुआ नहीं है आपका? क्या सर? कोई भी एल्गोरिथम नहीं बनाया हुआ है आपका? सर पहले का सब बनाया हुआ है सर, जितना पढ़ा है। वही प्रेजेंट कीजिए आप, है ना? ओके सर। शेयर कीजिए स्क्रीन। अलाउ करूं मैं यहाँ से? यस सर। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, है ना? इंट्रोडक्शन के बाद बताना है किसके बारे में, कौन सा एल्गोरिथम है, क्या प्रोजेक्ट है, इस तरह से बताना है, ठीक है? ओके सर। एक मिनट। यस, यस विनायक, यू कैन स्टार्ट। यस सर, आई एम जस्ट। So, sir, my name is Vinayak Gupta. Currently, I'm a BCA third year student, and I have implemented one algorithm whose name is names base. So, sir, firstly, sir, I have imported all those modules which I required to use in my project. So initially, this first line from sklearn.datasets, I have imported load iris. Actually, load iris is actually a data set which which I would be using there, which I will be using in this particular algorithm. So first of all, I have imported this load iris dataset actually, and then sir I have imported sklearn.model selection. From sklearn module there is a model selection class, and from that I have imported
train test split for splitting the data set into two parts, data part and target part. Then sir, I have imported the algorithm, like the algorithm itself, like Gaussian NB. So it is the Naves based algorithm. So it is also I have imported this. And then sir, for finding the accuracy of the model, because we know that for any machine learning algorithm, accuracy matters the most, because after finding the whatever the data which that algorithm is going to predict, we have to find the accuracy. So for that, I have imported this as from sklearn.matrices. I have imported accuracy underscore score. Then here I have imported this load iris is a method. Load iris is a method which loads the iris data set into iris underscore data set. Now what I have done, I have kept the data part in X and the target part in Y, sir. So after this, I have here in the third cell itself. Let me run this. In the third cell itself, what I have done, I have used the train test split function, where I am storing the X train, X test, Y train, and Y test. These all are this X train and Y. Is this X train and X test are this X train is the training data on which the machine learning model would be trained, and by supplying this X test value, we would test the what the algorithm is actually predicting. And here we have separated the label part, the target part, which is within the training part, Y underscore train, and we will supply this X train and Y train to the model. And then again we have Y test, because we have kept Y test, because after getting all the results, the predicted value, we will compare those predicted value with the actual value which we have stored in case of Y underscore test. Now after this, we have used this Gaussian NB class, and we have created an object of Gaussian NB, that is the Naves based algorithm. The object is NB, and now we have trained the model by using the fit function. So while training the model, I'm sending the X train and Y train part. X train is the data part and Y train is the label part. So we have to send both, because the model would be trained on the data and its corresponding label itself. Now I am using the predict function here to retrieve the output, to predict the value of X underscore test. So X underscore is actually the test data on which we have to test our machine learning algorithm, that is the Naves based algorithm, and we have kept the result in Y underscore predict. Now we have print the both Y underscore test, the actual result, and Y underscore predict, the predicted value. After this, by using the accuracy underscore score function, we have I have find the accuracy, and then after finding the accuracy, I have print the accuracy here. And after this, I have drawn the confusion matrix. Actually, confusion matrix is a way by which we can find out how many data actually which the machine learning algorithm has predicted is true. So here, if I talk about in iris dataset, there are 3 labels. So that is why here it exists 3 columns and 3 rows. So here it would be 0, 1, 2, and here it would also be 0, 1, 2. So actually there are 10 data which are 0, and it has also predicted 0. While there are 9 data which are 1, and it has also predicted 1. While there is one data which is actually 1, but the model is predicted as 2. Again here there is one data whose actual value is 2, but the model has predicted 1. And there are 9 such data actually which is true, and the model has also predicted the same. And after that, so yes, this is a different model. Yes. Okay. So Vinayak, I think you have completed. Yes or no? Yes, sir. Okay. So can you explain about data set? What is data set and which data set you have taken? Yes, sir. I have taken the iris data set. First of all, go to the data set part. Okay, sir. Yes. Tell me which data set you have taken and what is the data set? Sir, actually data set is the collection of data, sir, on which we train our machine learning model, because machine learning is all about training. Because first we have to train our model, and then only we can accept the model to get the output. Sorry, the algorithm to predict certain values. So here, sir, I have taken the iris data set. Okay, so it is multi-class or binary class? No, sir, it is multi-class data set. So actually, what is the difference between multi-class and binary class? So binary class is a class where only 2 classes are available. But in case of iris dataset, it is multi-class class, because there are 3 values which are available in iris, 0, 1, and 2. So that is why it is known as multi-class. And in case of binary class, there would be only 2 values.
Okay. So can you tell me the purpose of using train test split function? So trend test split function is mainly used to split the data set into two parts, because we are going to split. Look, sir, we are not going to send all the data to the machine learning for training purpose. We want to send a specific amount of data for training purpose and keep the rest of the data for our testing purpose. So for dividing the data, for splitting the data into train and for splitting the data, basically we use this train test split, sir. Okay. So can you explain about the Naive-Bayesian theorem or the Naive-Bayesian algorithm, how it works and what is the fundamental basic behind it? Yes, a naive-Bayes is a machine learning algorithm which works on the Bayes theorem, which we have learned in case of probability. Actually, sir, it uses the concept of conditional probability to predict the value of any supplied data set or any supplied value, sir. Okay. Okay. So what is the use of confusion matrix here? So, as I have mentioned earlier, sir, confusion matrix is basically gives us a diagrammatic representation where we are able to find out that how many data which the machine has predicted true, and how many data the machine has, how many values actually the labels which are being predicted by the machine is true, and how many are false. Okay. So one more question. Tell me how you can load the data set from sklearn. Sir, from sklearn I have used here sklearn or data sets, and here, sir, I have actually imported the iris data set. But for loading the data set into a variable, we have to use whatever the name which we have used here. It should be used as a function here if we want to import that particular data set. Okay. So why you have taken X and Y here? Where, sir? Yeah, in second cell. Okay. You have So, taken sir, X and Y. here actually, sir, I have taken the data part of iris dataset, because iris dataset would contain the dataset with data as well as label, because but we have to split it out. Okay, sir. So for data, for keeping the data, I have taken X, and for keeping the label, actually I have taken Y. Okay. So one more thing, why you have used fit function and predict function? So fit function is used to train a model. For training any model, we use fit function in any algorithms which we have learned till now. And predict function is used to predict the output, sir. Predict the value of a given input. So here I am sending X test as an input, and I want to get the result. So that is why I have used here Y predict also for getting the result and storing it here in Y underscore predict variable. Okay. Okay. So this is Naive-Bayesian. Okay. Yes, sir. Okay. So which next algorithm we have prepared, or next algorithm that you want to explain? I think in this project we have to upload. You have to upload the dataset first in your file section. Yes, sir. Yes. So left side, you will get error, I think, because you are adding the data from the local drive. So for file section. So first we have to upload the file. First, we have to run the first cell, I think. Yes. Now, yes, now This algorithm is a linear regression algorithm. So first of all, I have imported the pandas library, and for aliasing it for my convenience, I have aliased it as PD. Just Vinayak. First of all, you have to discuss what is linear regression and why we use. The which linear kind of data we need. Also a sort of machine data set we need. Yes. Yes.
So linear regression is also a machine learning algorithm which uses the concept of best fit line search to predict the value of to predict any sort of value. Actually, sir, any value which lies in a graph, if we are taking as a graph, so we have to make sure that the distance of that particular point to the best fit line must be minimum as much as we can. Okay. So which kind of data you will use in case of linear regression? So we use the classification problem, sir. We will Sorry, use. you are using linear regression. So sir, its name is just a linear regression, I guess. But which kind of data you can use in linear regression algorithm? Classification or regression? No, sir, regression problem, sir. Okay. So now you can continue. Yes, sir. So we will solve the regression problem by using the concept of linear regression. So in the first line itself, I have used the pandas library and imported it. Now under pandas library, there is a method which is known as read CSV, which reads the CSV file and load I am loading it in data frame named variable. Now when I am printing it data frame, the whatever the data which I have loaded here, it is being visible. And now from the train, again I am importing the train test split model for splitting the data set or data frame. And then, sir, I am in this case, sir, accuracy underscore score is not used. Here I am using R2 underscore score, which is also available under sklearn.matrices. And sir, here I have in the X part, I have taking all those variables excluding the last column, that is the label column. So I'm taking it as X, and in Y column, sir, I am taking the values of 9th column, which is the last column of the data frame. And here, sir, I'm dropping that particular column from the data frame section, that is the column 0, and here I'm dropping the column as column 1. Now this is the value of X and Y here. Now I will do the same. I will split the X data into X train and X test part, so that some data can be kept for training purpose and some data can be kept for testing purpose. And same is for Y train. Some label can be used for testing purpose and some label can be used for training purpose. Now from sklearn.model, I have imported linear regression model, that is the algorithm which I would be using there. And now here in this line, I have made a object of linear regression. And then I have used the fit function to train the model. And then for predicting the value, I've used predicted function, where I have just passed the X test value, which is this particular thing. And then for finding the accuracy, this time I am using R2 underscore score method for finding the accuracy. And then the accuracy is as it is visible here. So accuracy is 88%, I think. Yes or no? Yes, sir. Okay. So tell me, what is the difference between linear regression and logistic regression? So linear regression, first of all, linear regression is primarily focuses on solving regression problem, while logistic regression is used for solving the classification problem. And sir, linear regression uses the concept of best fit line, and logistic regression uses the concept of cost function and the linear gradient, I would say. Those concepts it uses to solve the particular problem, sir. So just one more thing I would like to ask. Just scroll up. Yes, sir. And go to the 7 number cell. I think that where 7 is mentioned. I think yes. Just run 8 number cell. Yes. So you can see advisor. Yes, sir. ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो यहाँ पे, वो फर्स्ट वाला तो हेडर नहीं है, वो फिर भी वहां चला गया. देखो उसको कैसे ठीक करेंगे हम? एक्चुअली जो आपको हेडर दिख रहा है ना, वो हेडर नहीं, वो एक्चुअली वो डेटा ही है. यस सर, वो डेटा ही है सर. उसके लिए कैसे ठीक करेंगे हम? सर तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप किया है, ये दोनों ये कॉलम्स को हम लोगों ने ड्रॉप किया है. Just you can add something in the 7th number cell where you have loaded the data set. Just write second parameter, comma, write comma first. Yes, write header.
equals to none. Now run this code. Here what is there? N, capital N. Capital N, yes. Now write. Yes, now you can run this code. Corrected? Yes or no? Yes, sir. So this is how you can add any data set from your system. Okay. So Yes. if you want to remove the header file, so just you can write header file. Okay. Yes, sir. And sir, here I think sir there is some problem. Why we have used iloc here? iloc is just used for the location, locating. So data frame में आप यूज कर रहे हो, so that means कि आप फर्स्ट को छोड़ के जितना भी है सारा आप लोकेट कर रहे हो एक्स में, है ना? सो Yes. लोकेशन मतलब डेटा फ्रॉम डॉट iloc मतलब ये हुआ कि आप जितने भी रोज हैं, जितने भी कॉलम, सबको ले रहे हो एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट व्हाट, -1 मतलब लास्ट वाले को छोड़ के। और ये इसका मतलब हुआ कि आप सारा नहीं, आप कौन सा ले रहे हो, केवल लास्ट वाले कॉलम का सारा ले रहे हो रॉ। इसका मतलब ये रॉ हुआ। देखो पहला वाला शो करता है रॉ, कितना रॉ लेना है, ये दूसरा कॉलम शो करता है रॉ मतलब तो पूरा लेना है आपको, किसी भी कॉलम का जितने भी रॉ हैं उसको लेने होंगे। और ये कॉलम में कौन सा करना है, -1 मतलब केवल छोड़ के, कौन सा छोड़ के, स्टार्टिंग से लास्ट को छोड़ के। और यहाँ पे देखो मैंने क्या मेंशन किया है, आपको सारा रॉ लेना है, लेकिन किसको किसको लेना है, केवल कॉलम नंबर केवल लाइन को लेना है। क्लियर है सर? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। दिस मींस दैट देखो iloc फंक्शन क्या करता है, लोकेशन के साथ साथ ये रॉ कॉलम दोनों पैरामीटर लेता है। सो आपने फर्स्ट दिया है ना कॉलम, पहले वाले में देखो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रॉ, कितना लेना चाहते हैं, और सेकंड शो करता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, जो लोकेशन मतलब सिंपल सी बात लोकेशन है ना। तो सर इसमें कॉलम में जितना कॉलम है उसमें से लास्ट वाला कॉलम को छोड़ दिए हैं। iloc मतलब सिंपल इंडेक्स लोकेशन है ना। सो बेसिकली इंडेक्स लोकेशन कैसे कह रहे हो आप, आपकी मतलब कि कॉलम में पूरा पूरा रॉ जितना सारा है वो आ जाएगा, लेकिन कॉलम में -1 का मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला कॉलम को छोड़ के जितना भी ये सारा डेटा आप ले रहे हो। यस सर। यानी हर एक कॉलम का आप रॉ ले रहे हो, हर एक रॉ ले रहे हो। वहां पे यहाँ पे क्या है कि आप रॉ तो सब ले रहे हो, जितना भी रॉ है वो सारा ले रहे हो, लेकिन किसका, कॉलम 9। हाँ ठीक है। एक तो वो तरीका, और दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था, या तो आप सारा का सारा ले लो, ड्रॉप कर दो, ये भी एक ऑप्शन है। हाँ सर, सर इसको ड्रॉप करने के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं कॉलम वाइज ड्रॉप करने के लिए ना सर। हाँ एक्सिस 1 दोगे तो कॉलम से ड्रॉप होगा, और एक्सिस, है ना, क्लियर है? यस सर, यस सर। और इसमें पहला रो और दूसरा रो दोनों को ड्रॉप प्रिंट करके देखो, प्रिंट करके देखो डेटा को। देखो ये ड्रॉप हमने इसलिए किया था, ये जो नाम था ना आपको ये विजिबल है। यस सर, यस सर, यस। इस डेटा को हमने ड्रॉप किया था, रीजन क्यों, इसको और इसको मैंने इसको सर ट्रेन करने का कोई जरूरत ही नहीं है सर। हाँ 0 और 1 को हमने ड्रॉप किया था। आप चाहो तो इसको ड्रॉप किया, लेबल इनकोडर से उसको वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो। उसका लेबल इनकोडर शायद मैंने बताया था आप लोग को, या नहीं बताया, मैं बता दूंगा। लेबल इनकोडर के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को कोई भी यदि कैटेगोरिकल डेटा है उसको आप कंटीन्यूअस डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। सो लेबल इनकोडर के हेल्प से किसमें कर सकते हैं कन्वर्ट सर? जैसे अभी देखो ये डेटा फ्रेम को प्रिंट करो पहले। सो देखो ये सारे वैल्यूज है ना, लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग है ना, देखो गौर से। यस सर, यस सर। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक डेटा, and if you want to change this as numeric data, so you can change by using label encoder। आप जाके रीड कीजिएगा, उसको देखिएगा, लेबल इनकोडर के हेल्प से आप किसी भी डेटा को न्यूमेरिक से यानी डिस्क्रीट से न्यूमेरिक में चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? यस सर। सो ये जो लास्ट वाला है वो सिंपल ड्रॉप किया था हमने, और ये सारा डेटा है जो हमने लिया था वहां पे। ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। ओके, आई थिंक ये आपने लीनियर रिग्रेशन और कौन सा ने बायस किया था। ठीक है। और बाकी जो प्रोजेक्ट मैंने दिया था उसका क्या है सर? वो अभी हम नहीं हो पा रहेगा सर, क्योंकि अभी एग्जाम है, थोड़ा हम उसको कंप्लीट करके दिखा देंगे सर। एग्जाम कंप्लीट होगा ना 5 से शायद 4-5 दिन है सर, तो उसको 10-11 तक 10 तक चलेगा मे बी। ओके, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। जो सेटअप यस सर, वो कंप्लीट कर लेंगे। सेटअप कर लिए, दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, है ना? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत, सेटअप कर नो लीजिए। सर।
इसके लिए मैं बता दूं, ये पाईचार्ट इंस्टॉल कर लेना, जो भी ओपनसीपी के प्रोजेक्ट होंगे उसी पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग पाईचार्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ में एक विजुअल स्टूडियो का जो है ना, एक जो है डेस्कटॉप C++ होता है उसके अंदर, वो इंस्टॉल कर लीजिए, जिसकी जो कि फेस रिकॉग्निशन वाला जो आपका मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, उसके लिए C++ चाहिए कंपाइलर, तो वो चीज वहां से इंस्टॉल करना होगा। कहाँ से करना मैं बता देता हूँ, ये आप यहाँ से स्टॉप कर दे सर। हाँ स्टॉप कर सकते। चलिए, और बाकी विकास यस सर। तो क्लास बहुत सारा मिस हो गया, तो कैसे काम होगा फिर? जाके सारे वीडियोस को देखिएगा, और यदि दिक्कत होगा तो हेल्प ले लीजिएगा विनायक से, यस सर। ठीक है? बाकी बच्चे तो शायद ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को? नो सर। ठीक है, एग्जाम कब से कब तक है? सर 5 तारीख से सर। 5 से, ओके। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर, एक आप क्लासिफिकेशन में बचा हुआ है न्यूरल सर नेटवर्क, 5 से 10 तक है। 5 से 10 है ना, एक बचा हुआ आपका न्यूरल नेटवर्क बचा हुआ है, एल्गोरिथम, है ना, जो कि डीप लर्निंग का बेस है। डीप लर्निंग का जो बेस है वही न्यूरल नेटवर्क है ना। यस सर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अनसुपरवाइज्ड में के मींस क्लस्टरिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये दो एल्गोरिथम देखेंगे, क्लियर है? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को तो पूछना है, कुछ पूछ सकते, कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? नो सर। ठीक है बच्चों, फिर स्टॉप करते हैं। विकास आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जाके वीडियो देखिए, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।